हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फर्स्ट थ्री पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. So we have to have the knowledge of the key concept which is the first three periods जिसके basis पे हमें ये आंसर करना है. So we will write the periods for our convenience. First period, second period and third period, all the elements in it. So elements जो होंगे फर्स्ट में सिर्फ हाइड्रोजन होता है एंड हीलियम होता है. सेकंड में होता है लिथियम, बेरिलियम. देन पी ब्लॉक में आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन. नाउ थर्ड में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. सो ये हो गया हमारे फर्स्ट थ्री पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो यहाँ पे यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको लर्न हो, बिकॉज ये तो सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ही हैं. यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न टिल 20 एलिमेंट्स. सो आई होप कि आपको याद होगा. नाउ द क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13. सल्फेट के साथ इसका फॉर्मूला लिखना है. सो फर्स्ट में वी नो दैट सल्फेट इज SO4 2 minus, right? And we have to write it with the element with atomic number 13. So atomic number अगर देखो तो यहाँ पे aluminium का atomic number 13 होता है. So aluminium की valency होती है, it forms an ion as +3 ion. तो इसकी valency हो गई 3 और इसकी हो गई 2. So when you write the sulfates formula, it will be Al2SO4 thrice. So this is aluminium sulfate. Now the second question. Consider the following elements: calcium, oxygen, argon, sulfur, beryllium and helium. Which of the above elements would you expect to be in group 2A of the periodic table, in group 6A of the periodic table? Now, here, this is group 1A, this is group 2A, this is 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 8A. So, we have already written it. So, let us see the group 2A in the periodic table. So 2A में आप बेरिलियम और मैग्नीशियम में से बेरिलियम दिया हुआ है. So answer is beryllium, and this is the answer number A. Then answer number B for 6A. So we have either oxygen or sulfur, but यहाँ पे हमें oxygen और sulfur दोनों ही दिए हुए हैं. So here we have to write oxygen and sulfur both. Now let us read the third question. How many electrons are present in the valence shell of an element with atomic number 18? Atomic number 18 किसका है यहाँ पे? Atomic number 18 is argon. So over here we have argon. So हमें बताना है कि इसके valence shell में कितने electrons होंगे. So argon होता है 18 और इसका electronic configuration होता है 2,8,8. So we can see that the last shell में, which is the valence shell, we have 8 electrons. So the answer is 8 electrons in valence shell. Now let us read this next question. What is the electronic configuration of the element in the third period which gain one electron to change into an anion? So third period में एक ऐसा एलिमेंट जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म करता हो. ठीक है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन. तो वी हैव दिस एज थर्ड पीरियड. सो ऐसी चीजें जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, हैलोजन जो है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है दैट दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. सो ओवर हियर
अगर मैं क्लोरीन को कंसिडर करूं जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7. So this is the electronic configuration. So if you see the electronic configuration, it needs one extra electron. अगर हम इसमें एक add कर दे electron, so it will gain the electronic configuration of argon, which is the noble gas. और यही तो ये चाहता है कि मुझे noble gas का configuration मिल जाए. So it will gain one electron और एक इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद ये Cl माइनस अनायन बना लेगा. So this is the answer. Next question. What type of bonding will be present in the oxide of the element with atomic number 1? So here atomic number 1 is hydrogen. So basically hydrogen and oxygen के बीच में कैसी bonding होगी? दोनों ही नॉन मेटल है, तो दो जब नॉन मेटल्स मिलते हैं they form covalent bond or they form bond by sharing of electron. So here bond is formed by sharing of electron. So thus कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. द एटॉमिक साइज डैश as we move from left to right across the period because the dash increases but the dash remains same. So यहाँ पे जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम. शेल्स चेंज नहीं होती. कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये 281 होता है, मैग्नीशियम इज 282, एल्यूमिनियम इज 283, सिलिकॉन इज 284, phosphorus is 285, sulfur is 286, chlorine is 287 and argon is 288. तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि इसमें शेल्स चेंज नहीं हो रही, बस सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है. अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पुल. और इसी न्यूक्लियर पुल की वजह से वी सी दैट देयर इज अ फोर्स जनरेट्स बिटवीन देम व्हिच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि बढ़ता है. और बढ़ने की वजह से क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एटम का साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा. सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases. So the answer over here is the atomic size decreases as we move from left to right across the period because the effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge, it is also called as nuclear pull, increases but the dash remains same. But valence shell, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो remains the same. So this is the answer. So I hope you understood the answer. All the best.